Jai Hind friends, Vande Mataram. Now let's talk more about carbon and its property. Carbon seems to be very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also forms bond with other elements such as halogens. Halogens means chlorine, fluorine, bromine and iodine and all. Halide group are called that. Oxygen, nitrogen and sulfur. In the hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by this compound. An element replacing hydrogen is referred as a heteroatom. Is it clear? These heteroatom and group containing these confer specific properties to compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called the functional group. Some important functional group are given in the free valency or the valencies of the group are shown in a single line. The functional group is attached to a carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom. Okay, so in that context, let's try to understand what is the homologous series. Okay, you have seen that carbon atom can be linked together to form chain of varying length. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms of this carbon chain can be replaced by any one of the functional group that we saw above. The presence of functional groups such as alcohol decides the property of the carbon compound regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9O4 are very similar. These such series are compound in which the same functional group substitute the hydrogen in a carbon chain is called the homologous series. मतलब जहाँ से हाइड्रोजन के एक एटम को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, that type of series is called the homologous series. Look this homologous series which can be earlier in the above table. Okay, and you can understood CH4 and CH6. Okay, the difference is single bond CH2 unit. Similarly, C2H6 and C3H8, it is differ by CH2. What is the difference between next pair? Just guess and try to do it. Okay, out of the difference of molecular masses between these pair, the atomic mass of carbon is 12 unit and the atomic mass of hydrogen is 1 unit. Similarly, take the homologous series for alkane. The first number of series is ethane, which have already come across in. Which is the formula for ethane? Succeed number have the C3H6, C4H8 and C5H10. Okay. Can we differ this? Is it easy? Just think about it. Do we see the relation between the number of carbon and the hydrogen atom in this compound? The general formula of the alkene is the CnH2n and maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 anything. Can you similarly generate the general formula of the alkene and alkynes? That we can do. Okay. And all these I will send you in PDF also. Okay, as a molecular masses increase and homologous series, gradation in physical properties is seen. This is because the melting and boiling point increase with increase in the molecular mass. Other physical properties such as the solubility is a particular solvent shows a similar gradation, but the chemical properties which determined solely by the functional group remain similar in a homologous series. Okay, and next one is the nomenclature. Nomenclature means किसी का भी specific जो है नाम सेटअप करना और उसमें जो है कोई एक अल्फ़ाबेट को या फिर ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट को निकालकर उसकी जगह में दूसरे को सेट करना, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर. जैसे इथेन का इथेनल, ई पीछे से हटा के ओ NLE ऐसे करके जो है उसको सेट करना, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर. The name of the compound of the homologous series is based on the name of the basic carbon chain modified by prefix phrase before or suffix phrase after the
indicating the natural or functional group. For example, name of the alcohol taken is a methanol. Okay, अब इथेनॉल NOL, अब इथेन है, ई हटा के NOL उसमें हम लोग सेट करेंगे. इस तरह से प्रोपेन है, PROPANO बराबर है, तो ई पीछे आता है, उसको हटा के OL लगा दिया. ऐसे ब्यूटेन, BUTANE, ई हटा के OL लगाया. तो लाइक दैट वे ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल, प्रोपेन का प्रोपेनॉल, इस तरह से जो है आपके होमोलोगस सीरीज में जो है अलग अलग नाम देके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर होते हैं. इज इट क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस. आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा. देखो यहाँ पे, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टू बी गिवन एज सफिक्स and the suffix of the functional group being the vowel a, e, i, o, u, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix. For example, 3 carbon chain with the ketone group would be named the following manner: propane E. Okay, it is removed and instead of that O and E has kept, and that is the propanone. Is it clear? O and E, E replace किया और O and E उसकी जगह पे यूज किया. यहाँ पे आप इस पेज में पेज नंबर 46 में आप देख सकते हो, एंड यू विल गेट द बेटर आइडिया. देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे नेमिंग की जाती है. कौन सा सफिक्स हटा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो इथेन पीछे जो है OIC जो है सफिक्स यूज किया है, एंड लाइक दैट वे इट हैज फ्रेम्ड. इज इट क्लियर? इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सोपनिफिकेशन. इन हिंदी एंड गुजराती इट इज कॉल्ड द साबुनीकरण. तुमको मालूम है पुराने ज़माने से आदमी जो है हमेशा हाइजीन रहा है, हाइजीन कॉन्शियस रहा है, तो अपने बॉडी को, अपने क्लोथ्स वगैरह को, अपने वेसल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए उसे हमेशा कुछ ऐसे लुब्रिकेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है जो सरफेस में से मीसेल्स यानी गंदगी को, चिकनाहट को जो है दूर कर सके. और उसके लिए जो है उसने एशियन टाइम से जो है एफर्ट्स डाले हैं. शुरुआत में जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि शिकाकाई है, फिर अरीठा है, इन सब का इस्तेमाल करता था. आज भी अगर आप हिमालयन साइड में, नेपाल में और इधर कुमाऊं और गढ़वाल साइड में जाओगे तो वहाँ पे आज भी लोग बांस की राख का इस्तेमाल लोग कपड़े साफ करने के लिए करते हैं आज की तारीख में भी, क्योंकि वो नेचुरल डिटर्जेंट है, बराबर है. तो अब फिर धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस शुरू हुई, तो उसके बाद में जो है ऑयल एंड फिर जो है एनिमल के फैट से जो है ऐसे सॉप बनाए जाने लगे. लेकिन पंगा ये था उसका कि ये सॉफ्ट वाटर में तो काम करते थे, लेकिन हार्ड वाटर जिसमें अल्कलाइन चूना वगैरह मिला हुआ है उसमें जो है ये ढंग से काम नहीं करते थे. कि गंदगी एक बार सरफेस में से निकलने के बाद में जैसे ही पानी में उसको ये करते थे तो गंदगी वापस से जो है सरफेस पे चिपक जाती थी, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. तो ऐसी चीज़ों को जो है रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लिए गए, एंड दे बिकॉज कि वो जो है गंदगी को सरफेस में से दूर कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डर्ट एजेंट. यू नो वेरी वेल दैट इज द डिटर्जेंट, बराबर है. तो ऐसे डिटर्जेंट जो है सिंथेसाइज करके लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, खास करके क्रूड ऑयल की मदद से. यू नो वेरी वेल इन क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन इज देयर, सो इन दैट हाइड्रोकार्बन, विद द हेल्प ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड दे आर यूजफुल टू क्लीन द मटीरियल. अब किस तरह से, तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, एंड ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन एक लंबी चैन सोडियम की उसके अंदर क्रिएट होती है, बिकॉज इट इज अ वन काइंड ऑफ सॉल्ट ओनली, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप के. तो उसके सॉल्ट से जो है जब सरफेस में पड़े हुए गंदगी का केमिकल रिएक्शन होता है तो वो जो है वाटर से उसको ऊपर लेके जाती है और सरफेस को क्लीन कर देती है, और एक ऐसा लेयर क्रिएट करती है जिसकी वजह से जो है वापस से गंदगी जो है कपड़े में या जो भी सरफेस है उसमें चिपके नहीं, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. एंड दैट प्रोसेस is called the saponification and sabunikaran. Is it clear? In this picture you can see, and one more picture I am showing you. Just see here. ये देखिए यहाँ पे कुछ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यहाँ पर. So this is the hydroponic and
टेल एंड इस तरह से जो है गंदगी को जो है वो सरफेस में से दूर करता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सोफेनिफिकेशन। ओके, हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस, हम लोगों ने इसको खत्म किया और ये चैप्टर ऑल्सो कंप्लीटेड। इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में इसका आपको वीडियो भी टेस्ट भी आएगा, तो वो सब PDF में आएगा, तो दैट वन यू कीप इन योर माइंड, बराबर है, ध्यान रखना एंड अकॉर्डिंगली जो है इसके लिए टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर देना। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।